Bonjour tout le monde, welcome to my channel. So, finally, the wait for this book is over, and I'm beginning with Mo Passport 2. A lot of you people have been demanding to me that I should start making video on it. So, finally, I'm here, and let's start with chapter number 1, that is Connaissons la France. So the first thing that we have to do in this chapter, it is all based on culture and civilization of France. So this is gonna be an interesting topic. You will get general knowledge about France. So the first part over here is La Fête Nationale, which means the national festival. Like we celebrate Republic Day every year on 26 Jan, the same way the people of France will celebrate the national festival on 14 July. So the first sentence says La Fête Nationale de la France est le 14 juillet, means the National Day or National Festival of France is on 14 July. Il y a des défilés sur les Champs-Élysées, means there are parades on Champs-Élysées, which is the biggest avenue of Paris. You can see here road type आप लोग देख सकते हो. This is Champs-Élysées. Okay. Now, second point we have is on regarding Paris. Paris आप लोगों ने सुना ही होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता होगा पेरिस सिटी के बारे में. La capitale de la France est Paris. जैसे इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है, वैसे ही फ्रांस कंट्री की कैपिटल हमारी क्या है, पेरिस है. Cette ville s'appelle aussi la ville lumière, means this city is also called city of lights. इसके रीज़न आप जो आपकी फर्दर टेक्स्ट बुक्स होगी उनमें आप लोग पढ़ोगे. अभी सिर्फ ये याद रखना कि किसको हम बोलते हैं सिटी ऑफ लाइट्स, पेरिस को बोलते हैं. सो दिस इज़ वन मार्कर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Then we have les monuments, means the monuments. जैसे India is also famous for few monuments which depicts India. Okay, वैसे ही हमारे फ्रांस में भी बहुत ज़्यादा famous monuments हैं. Let's see their names. Il y a beaucoup de monuments à Paris comme la Tour Eiffel, Notre-Dame, le Louvre, le Sacré-Cœur, le Panthéon, les Invalides et l'Arc de Triomphe. अब ये सारे के सारे मॉन्यूमेंट्स हमारे पेरिस के अंदर जो हैं उनके बारे में नाम हमारे दे रखे हैं. देर आर अ लॉट ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन पेरिस लाइक टूर एफिल विच इज़ द आईफिल टावर, नोट्रोदाम which is a kind of, you can say, church, Le Louvre, which is a museum, Sacré-Cœur is again a cathedral or you can say a church, then Le Panthéon, Les Invalides et l'Arc de Triomphe. So all these are the monuments name. Then we have l'hymne national, which is the national anthem. So l'hymne national de la France est la Marseillaise, means the national anthem of France is this Marseillaise. Okay. Now coming to the next page, it is la monnaie européenne, means the European currency. अब ओवरऑल यूरोप के अंदर ऑलमोस्ट जो कंट्रीज़ होती हैं वो एक ही करेंसी को जो है फॉलो करती हैं, एंड दैट इज़ यूरो. ठीक है. सो द मोने यूनिक यूरोपियन ए यूरो, मीन्स द कॉमन और यू कैन से यूनिक यूरोपियन करेंसी इज़ यूरो. Les fromages, which are cheese, le camembert, le brie, le reblochon et le roquefort sont des fromages français connus. Means camembert, brie, and ye reblochon and roquefort, these are famous French cheese. Connu means famous or you can say well known. Then we have les vins, which means wines. Le Bordeaux, le Beaujolais, le Champagne sont des vins français très connus. Means Bordeaux, Beaujolais, Champagne. These are the very famous French wines. Then we have les pays francophones, means फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज. फ्रांकोफोन वर्ड जहाँ पर आ जाए तो आप लोगों को समझ जाना है, इट मीन्स फ्रेंच स्पीकिंग. उसके आगे जो भी लगा है वही. ठीक है. जैसे कि पे मतलब फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज. Then the French-speaking countries are Belgium, Switzerland, Luxembourg, Canada, which is Canada. So the pays francophone are some French-speaking countries. Then we have les pays voisins, means neighboring countries. So France जो है, it is entouré. Entouré का हमारा मीनिंग क्या होता है? Means surrounded by 6 countries, 6 countries उसको जो है सराउंड करती हैं. Les pays voisins de la France sont la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg, l'Italie, la Suisse
ए लास्पाइन मीन्स जो नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस से, नेबरिंग कंट्रीज है फ्रांस की, वो हमारी कौन कौन सी हैं? बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, इटली, स्विट्ज मीन्स स्विट्जरलैंड एंड स्पेन मीन्स स्पेन. ओके, सो ये हमारी 6 नेबरिंग कंट्रीज हैं. Okay, then let's come to the next points over here. Means cities. Paris, Marseille, Nice, Lyon. So the ville française means Paris, Marseille, Nice, and Lyon. They are some French cities. Then les montagnes, which means the mountains. Les Pyrénées, les Alpes, le Jura et les Vosges sont des montagnes françaises. तो ये हमारे mountains के नाम हैं. Then we have les fleuves, which means rivers. तो मेन रिवर्स जो हैं हमारे, दे आर सेन, लुआर, गारोन, रोन एंड री. जो हमारी लुआर है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर. ओके. ले कुचूरिए विच मीन्स फैशन डिज़ाइनर और यू कैन से ड्रेस मेकर. जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को कुचूरिए का मीनिंग दे रखा है ड्रेस मेकर. इट कैन ऑल्सो मीन फैशन डिज़ाइनर. ओके, सो कुछ फैशन डिज़ाइनिंग हमारी जो कंपनीज़ है, फ्रेंच फैशन डिज़ाइनिंग कंपनीज, दे आर शनाल, दियोर, यूवी सैन लॉरेंट, सो दे कुचूरियो, फ्रांसे कोन्यू. ओके, सो ये हमारे कुछ फैशन डिज़ाइनर्स हैं. सो दिस वॉज द इंट्रो वीडियो. लेट्स लुक एट द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. Question is complete les phrases means complete the sentences. La monnaie unique यूरोपियन ए मतलब जो हमारी कॉमन यूरोपियन करेंसी है वो कौन सी है? सो दैट इज़ यूरो. EUR&O. La France est entourée de dash pays. कितने ज़्यादा कंट्री से वो हमारा सराउंडेड है? 6. C. Sorry, I'm not able to annotate properly over here, so I'm writing it sideways. Then third question, it says le plus long de la France est. जो longest हमारी river है फ्रांस की वो कौन सी है? It is Loire. So यहाँ पर हमारा आंसर आएगा Loire. Then we have part number 4 of question number 1. L'hymne national de la France est dash. कौन सी हमारे नेशनल एंथम है फ्रांस की? मार्सेलेस. तो यहाँ पर मार्सेलेस आएगा. पारिस s'appelle aussi la ville lumière, जो मैंने आप लोगों को बताया था 1 मार्कर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देन वी हैव नोमे, दैट मीन्स यू हैव टू नेम. ले विल फ्रांसेस, तो फ्रेंच सिटीज़ जितनी भी आपने पिछले में से पढ़ी उनमें से आप लोग कोई भी 2-3 सिटीज़ के नाम यहाँ पर लिख सकते हो. ले फ्रोमाज फ्रांसे, जो फ्रेंच चीज़ पढ़ी उनके नाम. ले वां फ्रांसे मीन्स फ्रेंच वाइन. ले कुटूरिए फ्रांसे मीन्स फैशन डिज़ाइनर और ड्रेस मेकर, फ्रेंच ड्रेस मेकर. ले फ्लव फ्रांसे मीन्स फ्रेंच रिवर्स. ले मोंटाइन फ्रांसेस मीन्स फ्रेंच माउंटेन्स. तो ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपने प्रीवियस टेक्स्ट पढ़े उनमें से डायरेक्ट आप लोगों को आंसर्स लिखने हैं. 7th part of this question number 2, it is les monuments français means French monuments. Les pays francophones means French speaking countries. Les pays voisins de France means the neighboring countries of France. So as I told you, direct questions are here. Okay. Then we have dit vrai ou faux means you have to tell whether the sentences are true or false. So the first sentence is Le Canada est le pays voisin de France. So Canada, it means कि Canada is the neighboring country of France. So this is wrong. Then we have Lyon est une ville française. Lyon जो है, it is a French city. So it is correct. The Champagne est un fleuve français means जो हमारी champagne है, it is a French river. So this is wrong because it is a wine. Le Chanel est un vin français means जो हमारा Chanel है, it is a French wine. So this is wrong because we have already studied कि that is a dressmaker. ठीक है. So this is wrong again. Le Reblochon est un fromage français means Reblochon is a French cheese. So this is correct. Now, relier les noms à des images means you have to look at these names and then match to their corresponding answers. So, le Beaujolais, le Brie, le Rhône, le Euro, les Pyrénées. So, as you already know, Beaujolais हमारा क्या है? It is a wine. तो wine से match कर देते हैं. Brie हमारा क्या है? Cheese है. तो cheese से match कर देते हैं. Let me just take different colors for each answer. लबरी हमारा क्या है? चीज़ है. सो वील मैच इट. What has happened? Okay, so Beaujolais is a wine. Then we have Brie, which is a cheese. Then
Le Rhône, which is a river, then l'euro, which is the currency, and the last one, Le Pyrénées, which is the mountain. So these are the answers to question number 4. Now coming to, so these are the last questions. Yes, now we have two activities over here, activité 1, activité 2. So these are the activities that you are going to do yourself.